हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हेडिंग डाल लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस ऑन द वर्ड जेनेसिस। इन बायोलॉजी जेनेसिस refers to the formation or synthesis or synthesis. Now we will talk about spermatogenesis. तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिससे स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस के अंदर। ठीक है, वी विल राइट स्पर्मेटोजेनेसिस is the process of formation of a sperm inside the testis. सेकेंड पॉइंट हमें ये समझना है कि टेस्टिस में स्पर्म कहाँ पे बनता है। तो टेस्टिस में स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। उस कंपार्टमेंट में 1 से 3 संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन seminiferous tubules of the testis। अब जो है हम लोग बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो लाइंड होता है जर्मिनल एपिथेलियम से। ठीक है, सेमनीफेरस tubules are lined by germinal epithelium। और जर्मिनल एपिथेलियम जो है एक टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू में आप लोग पढ़े होंगे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है। एपिथेलियम टिश्यू में अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। तो उसी तरह से जर्मिनल एपिथेलियम में जो है 2 अलग अलग सेल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज प्राइमरी germ cell, in short form it is PGCs, and the second is Sertoli cells। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी जर्म सेल जो है क्यूबॉइड शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप्ड, और सेर्टोली सेल्स जो है ये टॉल होता है, टॉल सेल्स। अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली में स्पर्मेटोजेनेसिस हो कैसे रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है 2 चीजों के बनने को हम लोग बोलते हैं। पहला स्पर्मेटिड का बनना, दूसरा स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफॉर्म होना या बनना। ठीक है, तो हम लोग उसे देखते हैं। Now, spermatogenesis includes 2 processes. First is formation of spermatids. Second, formation of स्पर्मेटोजोआ। अब हम लोग सबसे पहले स्पर्मेटिड के बनने के तरीकों को देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ
spermatids. Formation of spermatids includes several phases like multiplication phase, growth phase, maturation phase. So we will see all of these phases one by one. It includes multiple phases or steps, and the first one is multiplication phase. Let's now talk about this phase. Multiplication phase basically refers to the phase during which primary germ cells are repeatedly multiplied or divided mitotically and produce a large number of spermatogonium. ठीक है? In this phase, प्राइमरी जर्म सेल, इसके बारे में हम लोग पहले बात किए हैं. प्राइमरी जर्म सेल आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड repeatedly and produces a large number of spermatogonium. अब जो है हम लोग सेकेंड फेज की ओर मूव करते हैं, विच इज ग्रोथ फेज. Growth phase. At this phase, we see spermatogonium are produced by multiplication phase. At this phase, these spermatogoniums are transformed or divided or matured or grown into primary spermatocyte. Spermatogonium are grown into primary spermatocyte at this phase. Now we will talk another important point, which is primary spermatocyte. The ploidy of primary spermatocyte. You all know primary spermatocyte eventil does not undergo any reductional division, so the ploidy is diploid. Primary spermatocyte is diploid. Now we will talk about the third phase, which is maturation phase. It is the most important phase in formation of sperm. Maturation phase refers to the two successive meiotic divisions which is done by the primary spermatocyte. So in this step, primary spermatocyte undergo two successive meiotic or reductional division, which is meiosis 1 and meiosis 2, and produces 4 haploid spermatids. We will see it diagrammatically.
First of all, this is our primary spermatocyte, which is diploid primary spermatocyte. First meiotic division, meiosis 1. It will lead to formation of two haploid secondary spermatocyte. Further, secondary spermatocyte undergoes meiosis second, which will lead to formation of 4 haploid spermatids. It is our first formation of spermatid. Now we will talk about formation of the spermatozoa. Formation of spermatozoa. So we will talk about a process which is known as spermiogenesis. But you should concern about this. It is a different term from spermatogenesis. Spermatogenesis is different. Spermiogenesis is different. Spermiogenesis refers to the transformation of spermatids into spermatozoa. It refers to the transformation of spermatids into spermatozoa. Now we will talk about a process or next step. The spermatozoa are embedded in Sertoli cells. Its head are embedded in Sertoli cells. Next point we will write, spermatozoa head are embedded in Sertoli cells. We will discuss about Sertoli cells. These are also known as nursing cells. Nursing cells. Why these spermatozoa head are embedded in Sertoli cells? Obviously for nourishment. For nourishment. Next point, we will talk about a process or a step which is known as spermiation. Spermiation. Spermiation refers to the release of spermatozoa from the seminiferous tubules. It refers to the release of spermatozoa from seminiferous tubules. Then students, now we will see all these steps diagrammatically. Let's see. This is our spermatogonium. 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 Its chromosome number. Here we will write chromosome number of each of the structure. Chromosome number. Its chromosome number is 46. Spermatogonium after growth phase leads to formation of primary spermatocyte. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसी से जो है पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर जो है स्पर्मेटिड्स बनेगा.
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। इसके बाद ये डायग्राम हम लोग पढ़े हुए हैं, ये मियोसिस 1 में जाता है विच इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 it lead to formation of two haploid. Now from here to here it is diploid and it is haploid. Secondary spermatocyte. Now we will talk about chromosome number. It is also diploid, hence its chromosome number will be 46. It is also it is haploid, तो इसका क्रोमोसोम नंबर, इट्स क्रोमोसोम नंबर विल बी 23. Further meiotic division, meiosis 2, it lead to formation of spermatids, 4 spermatids, and each of them are haploid. Four spermatids. Its chromosome number also will be 23. Now we will talk about phases. Here this refers to multiplication phase, and from here to here it is growth phase. Further onwards it is maturation phase. So now we saw about the spermatogenesis. One last thing we will discuss about the hormonal control of spermatogenesis. It means how spermatogenesis is controlled hormonally or how it is initiated in males. The last point I will teaching that hormonal control of spermatogenesis. सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है। तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है कोई भी बॉय, उस टाइम पे एक हार्मोन है, आप सभी लोग को याद होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है विच इज GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उसे देखते हैं। एट सेक्सुअल मैच्योरिटी GnRH, it means gonadotropin releasing hormone, secreted by hypothalamus, secreted by hypothalamus. GnRH at sexual maturity, GnRH acts on anterior pituitary gland and leads to secretion of two very important hormone. You will familiar with two hormones, that is LH, second FSH. LH is luteinizing hormone, FSH is follicular stimulating hormone. So first we will talk about LH. LH acts on Leydig cells, and these Leydig cells start secreting androgen or testosterone. It secretes androgen hormone, which further stimulates the process of
spermatogenesis. Next we will talk about FSH. FSH acts on Sertoli cells and spermatogonium. Sertoli cells and spermatogonium. Further, Sertoli cells secretes two hormone, which is ABP, androgen binding protein. Androgen binding protein. What it does? It helps in concentrating the testis hormone. Second, inhibin. Inhibin, it is a inhibitory enzyme or inhibitory protein which further stops the secretion of FSH. It stops the secretion of FSH. Spermatogonium, it stimulates the process of synthesis of sperm. This is all about spermatogenesis. Thank you बच्चों.